Hello, good afternoon, everyone. Am I audible? Hello, am I audible now? Hello, hello. Yeah, so am I audible, right? Okay, so we are here for our second day workshop, right? And the topics you are already aware with it, right? So let's start because we are already late with the 10 minutes. We are starting about around 1 p.m. It's 1:10 already, right? So this sometime YouTube gave us some difficulties, and that's why we are here. Okay, so good afternoon, everyone. Let's start with our session. Okay, so I will request our trainer to start with the session. Be aware, be attentive, so you can get to know what exactly ma'am is saying and what is the concept behind it. Okay, so I will request ma'am, please, you can continue. Yeah, thank you. Okay, so good afternoon, everyone. So, in today's session, we are going to see the next topic. So, in yesterday's session, we have covered with the some topics of data structure and algorithm, and as well as SQL. Okay, so in today's session, we are going to continue with the two more topics, that is the JavaScript and React. Okay, so first of all, I'll share my screen. Just give me 1 second. So, yes, everyone, screen visible. Yes, give a confirmation. Screen visible, everyone. Okay, fine. So, in today's session, first we are going to see the topic, that is the JavaScript. Okay, so see, JavaScript, first we understand what is exactly the JavaScript. So, what is JavaScript? So, JavaScript is a lightweight programming language and we call it as a scripting language. Remember that we have other languages like HTML and CSS. We cannot call this as a programming languages. Why? Because there is no any kind of a programming concept used. But if we concentrate on the JavaScript, so yes, definitely JavaScript is a programming language. एक तो ये programming language है. We call this as a scripting language. Why? Because we are going to use a scripts in it. Okay. So यहाँ पे हम script tag का use करके या फिर स्क्रिप्ट्स का यूज करके जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो हम क्रिएट करते हैं. इट इज बेसिकली यूज टू मेक अ वेब पेजेस इंटरैक्टिव. ओके, सो अगर आपको आपके वेब पेजेस इंटरैक्टिव बनाने हैं तो हम क्या यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं. देन
insert a dynamic text into the HTML. Okay, so see, HTML is what? It's a static. Static means what? Non-changeable. So अगर आपको आपका जो भी टेक्स्ट है या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर कंटेंट है उसे आपको चेंज करना है, आपको उसे इंटरैक्टिव बनाना है, डायनामिक बनाना है, देन यू डेफिनेटली हैव टू यूज द जावास्क्रिप्ट. It reacts to event. Okay, so जैसे कि अलग अलग इवेंट होते हैं, क्लिक इज अ इवेंट, देन वी हैव अ पेज लोड, देन की माउस का इवेंट होता है, दैट इज द की प्रेस, की डाउन, की अप. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. सो इफ यू वांट टू वर्क विद द इवेंट देन यू मस्ट हैव टू यूज द जावास्क्रिप्ट. Then also to get the information about the user's computer, for example, if you want to understand what is the browser type, what is the IP address of the particular link, okay, so for that particular thing we can use this particular JavaScript. And it is also used to perform some calculation. So अगर आपको कुछ calculation करना है और उस calculation का result आपको अगर return करना है, then definitely you have to use the JavaScript. So we can say that JavaScript is very much useful for the programming things and for the development things. And JavaScript is a one strong language that can be used in a front end also, and that can also be used in a back end. Okay, so next we see that is the what exactly the difference between the JavaScript and Java. So see, JavaScript it is interpreted not compiled. Okay, so Java के जो प्रोग्राम होते हैं वो कंपाइल किए जाते हैं and then it will be getting executed. So first of all we have to compile and then execute. But about the JavaScript it is interpreted. Okay, हम JavaScript के जो भी प्रोग्राम है वो हम interpret करते हैं. Then more relaxed syntax and rules. So fewer and looser are particular data types, then variable don't need to declare here, error often silent. Okay, so JavaScript में क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर डेटा टाइप्स है वो हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसे कुछ डेटा टाइप्स नहीं. जैसे कि यू नो दैट इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ अ नंबर इन अ जावा, देन you must have to use the data type like an integer. If you want to represent a point value, then definitely you have to use a floating point, that is the float data type. If you want to use or if you want to represent a character, then you must have to use the char data type. So in a Java every data type is specific, but in a JavaScript there is a no need to mention any particular data type. आपको कुछ भी data type mention करने की जरूरत नहीं है. That particular variable can accept or can take the data of any data type. Okay, वो जो data है, वो जो variable है, वो किसी भी data type का जो data है वो accept कर सकता है. Variable don't need to be declared. Okay, in a JavaScript there is a no need to declare the variable. हमें variable declare करने की जरूरत नहीं है. If you are directly using any variable, it is also accepted in a JavaScript, but it is not the case in the Java. Okay, in Java it is having a strict rule. That is means what? Ki first of all you have to declare the variable, and then only you can use that variable. If you are trying to attempt, like first of all if you are trying to use the variable and then you are declaring, then it will not be allowed in a Java. It will give you the syntax error. Okay, and that's why here in a JavaScript there is a no need to declaration of the variable. You can directly use it. In a JavaScript some errors are silent. Okay, so there are some exceptions, there are some errors which are not exactly shown to us. Okay, but yes they can give a output, but output may be wrong. Okay, so that's why we call it as some errors in JavaScript are silent. The key construct in a function is the function rather than the class. Okay, so in a JavaScript we are morely concentrating on a function. So if you want to perform any kind of a execution, if you want to perform anything, then you must have to use a function in a JavaScript. But whereas if you are considering for the Java, it is not the case. In a Java everything is like a class. Okay, so everything we are going to concentrate in a class, we are going to code in a class in a Java thing. Okay, so here it is contained within the web page and integrated with its HTML or a CSS content. Okay, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो हम HTML CSS के अंदर लिखते हैं, means we are going to write that code into the HTML by using a script tag. Okay, so like this we are going to mention all this particular thing, but whereas you know that in a Java we are not going to add any kind of a Java code into the HTML one. We are going to create a separate file for the Java which were the with the extension as a .java. Okay,
In JavaScript, its file extension is a .js, whereas in Java, its file extension is .java. Okay, so like this, we can say that these are some differentiation, or these are some points which are different in a JavaScript and Java. Okay, so now next we understand like how we can link this JavaScript file to our HTML file. So see, script tag should be placed within the HTML page's head. If you want to write any JavaScript code, you must have to write it inside the script tag. Okay, so you can see there is a syntax. So here we have to write a script, then we have to write the src file name, then type equal to text or JavaScript, and then we are going to close the script. So this is when, see, there are two types. The first is what you can write the HTML code and JavaScript code in a single file only, or else you can write the separate HTML file and separate JavaScript file. Then you have to attach that JavaScript file to the HTML file with the help of this script tag. Okay, script tag का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो भी HTML के ये जो पर्टिकुलर JavaScript की फाइल है उसे आप अटैच कर सकते हो HTML के फाइल के साथ. The script code is stored in a separate .js file. Okay, so if you want, you can also store this script code, JavaScript code, into a separate file, and its extension will be the .js. Okay, so जो भी JavaScript की फाइल होती है उनका extension जो होता है वो हमेशा .js होता है. But remember this thing कि यहाँ पे कैसे होता है, अगर आप separate JS की फाइल करोगे तो ही आपको उसका extension .js देना है. But if you are going to add the HTML file and JavaScript file into a single one, then what you have to do, you have to give the extension as a .html. Why? Because it's a HTML file, and inside that HTML file, we are going to add the JavaScript file. The JavaScript code can be placed directly in a HTML file body or a head section. Okay, this is the third thing, that is, you have to write the code in a script tag. And second important part is what? This script tag you can add into head section also, and this script tag you can add into a body section also. Okay, so in a both the sections you can add this particular thing, you can place this particular tag. Now next we are going to see that is how exactly it will work, okay, with the help of this diagram. So see, suppose there is a one button on web page, okay, and we want to perform some interaction with this particular button. So this is the button, and simply on your web page you are going to see this button. When you click on this button, event will occur. Okay, जब भी आप इस बटन को क्लिक करोगे तो क्या होने वाला है, इवेंट ऑकर होने वाली है. When event will occur, it will call the JavaScript function. Okay, that is the piece of a JS code will run in a response. So here when event will occur, it will call the JavaScript function, and when JavaScript function will get execute, it will generate some result, and that result will be replied as a click of the button. Okay, so what will happen, हम पहले बटन को क्लिक करेंगे. जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो वहां पे एक इवेंट ऑकर होती है. इस इवेंट से क्या होता है, वो इवेंट ऑकर होने के बाद वो कॉल करता है फंक्शन को. ओके, फंक्शन को कॉल करने के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, दैट फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूट. और फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होने वाला है, नेक्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो भी रिजल्ट है इट विल बी गेट रिटर्न एज द इवेंट्स रिजल्ट्स. ओके, so this is the whole cycle that will be executing in the JavaScript code. Okay, and that's why most of the time this JavaScript is basically used to reply to the event, to handle the event. Now next we are going to see that is the event driven programming. So you're used to program start with the main method. Okay, so in a PHP it will be like whenever you're going to start with the program, it will be start with the main method. The JavaScript program instead wait for the user action called event and respond to them. Okay, so in a JavaScript every program is event based. So when user will perform any kind of event, that event will get executed, means the function will associated with that event will get executed, and it will respond the result to that particular event. Event driven programming means what? It is writing a programs driven by the user event. Okay, यहाँ पे हम program के according, मतलब user के according जो भी program है वो हम event के according drive करेंगे, उसे हम execute करेंगे. जैसे ही event execute होती है then only it will get called to that particular function.
Okay, so like this we can create this particular thing. Okay, so suppose now let's see one simple example. Okay, so we will see the simple example of this particular JavaScript. So here I have opened my Visual Studio Code. Okay. So here how to create a file. First of all, I'll tell you how to create a file. So this is the Visual Studio Code. This is the ID for creating any kind of a programs. You can create any kind of a programs with the help of this particular Visual Studio. Now you have to go to the file. Okay. So after that you have to click on the new file. Here we have to give name to the file. So now currently what I'm doing, I'm going to write the JavaScript code inside HTML only. That's why my file extension will be .html. Okay, so here I'm going to write my first program is the name of the file. I'm entering it. Now I have to give the location to this particular file. So we have to go to the documents, and here I'm going to save this particular in a document. You can create your own folder and you can store that program into that particular folder. Okay, and then we have to give the extension, that is .html. Why I'm giving the HTML as extension? Because I am going to write this JavaScript code inside HTML code. If you are going to create a separate JavaScript file, then the name of the file should be .js. Okay, and you have to connect that JS file with the HTML file. Okay, so here I'm giving a extension as a .html, and then we have to click on the create file. The file is created. Now let's execute the code. Let's start with the coding. So first tag in HTML we are going to write, that is HTML. After that we are going to write a head section, and then we are going to give a title to our program. So here I'm going to give my first program. After the head section, we are going to add a body section. Okay, body section add करने के बाद अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? We can write any particular content. So suppose I'm going to give a H1 heading. This is JavaScript program. After that, we are going to write a script tag. Okay, script tag I'm gonna close over here. Okay, inside this script tag we can write any kind of a particular code. Okay, so now first of all what we are going to do, we are going to create a button. Okay, so here I'm going to create a button. The name of the button I'm giving, that is click me. Okay, and here we are going to take an event, that is on click. Okay, there are lots of event we have. Okay, and here on click of this particular button we are going to call a my function. So the name of the function is what? It's a my function. Whenever you want to call a function, you must have to add the parenthesis after the function name. Why? Because it represents that we are calling that function, and it's a property of a function. That is, whenever we want to execute a function, we must have to call that function, because function will not execute by itself. Okay, function खुद ब खुद execute नहीं होते हैं. We have to call the function to get executed. That's why here I'm writing a my function. Okay, then in a script tag we are going to write a code for the function. So function के लिए हमें keyword use करना है function, the name of the function. Okay, so like this we can represent this particular data. Okay, here we can print the alert box. Okay, in a alert I'm going to write that hello students, we are learning JavaScript. Okay, so this is the simple thing we have done. So यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक बटन क्रिएट किया है. When we click on this button, it will call to उसके on click इस event पे, on click ये event है, उसके on click इस event पे वो call करेगा my function को, and when my function gets called, it will represent the alert box, and in a alert box it is representing that hello students, we are learning JavaScript. Okay, then here script tag is closed, body tag is closed, and HTML tag is closed. Now let's execute this code. So for execution, I'm just right clicking it, and after that we have to select the option that is either open in a default browser or open in the other browser. Okay, and here I'm selecting a Google Chrome.
So here you can see that here my program is get displayed. This is the title. This is the particular title that I have given to my program. That is my first program. This is the particular heading we have written. That is, this is a JavaScript program and this is my button. When we click on the button, you can see that. So when we click on the button, event will get occur. When event will get occur, it will call to the function, and in a function, we are printing or we are writing the statement on our alert box, that is, hello students, we are learning JavaScript. Okay, so see again. When I click on button, when I execute the event, it will represent this particular alert box, and it is representing in an alert box, that is, hello students, we are learning JavaScript. Okay, so like this we can represent this particular thing. Okay, and like this we can code the particular JavaScript. So this is the button that we have now seen. So button text appears inside the tag and can also contain an image. Okay, so button जो है उसके लिए हमें button tag यूज करना पड़ता है, और इस बटन के अंदर जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने क्लिक में लिखा है, instead of this you can also use the image. So it's depend on you. To make the responsive button or the other UI control, we have to choose the control button, and event will be like a mouse event or mouse click, okay, of the interest. Okay, so हमें अगर आप कुछ भी event perform करनी है, then we have to select the button. That button should be clickable, that we can must have to perform some action on that particular button, and we can choose any event. We can also choose a hover event, on mouse up, on mouse down, on key up, on key down, on mouse click. Okay, so like this we can give the different kind of a event. Then we have to write a JavaScript function to run when event gets over, and attach that function to the event on the control. So जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में किया है, we have created a button, and the title of the button or the level of the button we have set, that is click me. When we click on this button, it will call to the my function. When my function is get called, it will represent the alert box, and in our alert box we are printing that hello students, we are learning JavaScript. Okay, so like this button will get work. Now next we are going to understand, that is the JavaScript function. Okay, so what is function? Function is a code block, or it is a block of a code which is used to execute a particular task. So suppose you want to perform some particular task, then you must have to use the function. Okay, so how we can write the function? Function syntax is like function, the name of the function, and parenthesis. Okay, फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस आना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज मस्ट टू राइट द पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ द फंक्शन. Okay, and after that here we can write n number of statement inside this curly bracket. Okay, आपको curly bracket open करना है, and curly bracket open करने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारे मल्टीपल जो भी कर्ली ये है स्टेटमेंट्स है, वो आप इस कर्ली ब्रैकेट में ऐड कर सकते हैं. दिस कर्ली ब्रैकेट वी कॉल इट एज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड. ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, सो हियर यू कैन सी द function is what? It's a my function, and in a alert box we are going to write like hello, and then a second statement we are going to write, that is how are you. Okay, so like this in a single code block we can write n number of a statement. Okay, एक single code block के अंदर आप बहुत सारे statement जो है वो यहाँ पे use कर सकते हो. Okay, so this is simple example of a function. Even in our previous program also we have used the function. Next concept is DOM. So remember this thing, DOM plays very important a role in a JavaScript. Okay, DOM ये जो concept है वो JavaScript में बहुत important role play करता है. Most of the JavaScript code manipulates the element on our HTML page. So we can examine the element state. For example, we can see whether a box is checked. So we can change the state, that is insert some new text into div. We can change the style. Okay, so DOM मतलब क्या है? Document Object Model. So in case अगर आपको आपका कोई भी program execute करना है, then you must have to use this particular DOM. Okay, so event perform करने के लिए हम जो main चीज use करते हैं, that is the DOM, and with the help of DOM we can perform different actions. So here we can have a HTML, then we have a head body, then in a head we have a title, in a body we have h1 div and paragraph. Okay, so like this we can execute all these particular things. So remember, DOM structure means what?
whenever you're writing any HTML code, that will get diverted to your particular browser. जब भी वो browser पे जाता है, ये structure create होता है. This is a tree like a structure, and this structure is nothing but the DOM, that is the document object model. So whenever you're executing any kind of a program of a HTML or JavaScript, or specifically in JavaScript, it will create its DOM, that is, it will create its tree structure at the backend. You are not able to see this tree structure. आपको ये tree structure दिखाई नहीं देगा. It will be in the backend thing. Okay, वो backend में create होगा और backend में ही होगा. So आपको ये दिखाई नहीं देगा. Okay, but backend में जो exactly work होता है, that is the thing, that is this one. Okay, now next, that is accessing the element. So to perform any particular thing, first of all, we must have to access that element. ओके अगर आपको कुछ भी एक्शन परफॉर्म करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ता है. So for accessing the particular element, the most commonly used method we are going to use, that is the document.getElement by id. Okay, so what does exactly mean? We are going to find the element by its id. That id we are going to mention in the bracket. Okay, so whenever we want to change any particular content, whenever we want to change any particular content's style, then we must have to use this particular method, that is document.getElement by id. So I'll show you one example how we can use this particular method. So here what I'm doing, so after this button, I'm going to add a paragraph. In this paragraph, I'm going to write one line, that is, this is my old content. Okay, this is my statement in a paragraph, that is, this is my old content. So here in a paragraph, I'm going to give a ID, and ID is what? It's a A1. Okay. Now, what is my requirement? I want to change the content of this paragraph. The old paragraph is what? This is my old content. I want to change this particular content by some another code. So how I can do that? For that particular reason, first of all, I have to find this element. Okay, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस element को पहले find करना पड़ेगा. So to find this particular element on the browser or in the particular program, we must have to write a statement, that is document.getElement by id, whose id we are going to mention dot inner html equal to new text, that is, so here what we have done, यहाँ पे हमने क्या किया है, document.getElement by id whose id name is a1. So current document में से हम एक id find करेंगे, element find करेंगे whose id is what, a1. जिस current document में जिसका element का id a1 है, that we are going to find. The content will be get captured over here, and inner html is a property which is used to change the content. So the previous content is, this is my old content, I want to change it. So here I can change this content with the help of this inner html property, and my new content is what, this is my new content. Okay, so whenever you execute this program, this is my old content, ये जो text है वो replace होने वाला है यहाँ पे, this is my new content से. Okay, so let's execute the code. So see, automatically on the browser, you can see that this is my new content. How it comes? So by using this particular line, that is this one. Okay, that is document.getElement by id, whose id name is a1 dot inner html equal to this is my new content. Okay, so like this, we can use this particular thing. Now, next we are going to see, that is changing the element style. Okay, with the help of this particular JavaScript, we can change the style of many more elements. Okay, so what we can change? So we can change the color of the element, then property or style of the object will be color. We can change the padding, we can change the background color, we can change the border top width, we can change the font size, and we can also change the font family. Next concept we are going to see, that is the variable. Okay, so variable is very important part in every programming language. So what is variable? Whenever we want to perform an operation, we must require a data. This data we can store into the
पर्टिकुलर प्लेस दैट वी कॉल इट एज अ वेरिएबल. ओके, आपको कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको डेटा चाहिए और उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसे हमें एक टेम्पररी स्टोर करना पड़ेगा. सो हम उसे किस में स्टोर करते हैं? वेरिएबल में. So here these are some example of a variable, that is var name equal to expression, var client name equal to this Coney client, and then we have a age as a 32 and weight value as a 127.4. So variable are declared with the keyword that is var, as well as we can also declare a variable with the help of let and const. ओके, सो वेरिएबल जो है वो हम पहले डिक्लेयर करते हैं फिर उसे यूज करते हैं. सो उसे डिक्लेयर करने के लिए हम क्या कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज द var कीवर्ड. So here the type are not specified, but JavaScript does not have type, that is it is a loosely typed. Okay, यहाँ पे देखो हमने कोई भी data type mention नहीं किया. We have not mentioned like any particular integer. We have not mentioned any kind particular like a float, char. Okay, so we must have to mention only a keyword that is var. So var represent that it's a new variable. Then here we can write the particular data of a type number, boolean, string, array, object, function, null, undefined. Okay, ऐसे अलग अलग टाइप के सभी जो डेटा है वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. Then if we want to find the data type of any variable, then we must have to use the type of operator. Okay, अगर आपको किसी भी particular variable का data type find करना है तो हमें क्या use करना है? We must have to use the type of variable. Okay, so like this we can use this variable. Next we have that is the number type. Okay, so what is number type? So whenever you want to store any number, whenever you want to perform any operation on the number, then we can use this number type. So here var enrollment equal to 99. So enrollment ये एक variable है जिसमें हमने number store किया है 99. Median grade is the particular variable whose value we have stored as a 2.8. Credits is the variable जिसमें हमने एक value store की है. So here integers and real numbers are of a same type, that is int or double. So same like here we are using the operators plus, minus, multiplication, division, modulus, plus plus, minus. Like this we हम बहुत सारे ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. Similar to precedence to the Java, it is same like Java. Okay, so here many operators can be used in a single particular operation that we call is as expression. Okay, so देखो जब भी data, so in this example 5 4 2 3, this we call it as a operands, and the signs like a plus, multiplication, then this we call it as a operators. And when operand and operators comes together, it will become a expression to perform any particular task. Next we see that is the comment. So what is comment? Comment are non-executable statement. So sometimes it is required that we must have to write a short note, we must have to write some kind of a things, then we must have to use the comment for that. Okay, कुछ ऐसे चीजें होती है जो डेवलपर खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर कोई भी दूसरा डेवलपर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रेफर कर रहा है, उस पर्टिकुलर कोड को रेफर कर रहा है, तो उसे अंडरस्टैंड होने के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कमेंट. सो कमेंट ये जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स. कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कमेंट आर पर्टिकुलरली नॉट शोन ऑन द आउटपुट स्क्रीन. ओके, कमेंट जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे मतलब ब्राउजर पे शो नहीं होते हैं. सो हाउ वी आर राइटिंग अ कमेंट? सो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखनी है, यू हैव टू पुट द डबल स्लैश. If you want to give the multi-line comment, then you have to give slash star, then whatever comment you want to use, and then star slash. Okay, so like this we can mention the comment in a JavaScript. Okay, और ये comment हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेवलपर जो है वो खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज द मैथ ऑब्जेक्ट. Okay, so next we are going to understand how we can use the math object. So what is the math object? Whenever you want to perform any mathematical operation, then we must have to use the math object. Okay, just a minute. Sorry for the disturbance. So yes, so whenever we want to perform any kind of a mathematical operation, then we have a different math object. These are ready object. These are ready methods. We just have to directly use these methods and you have to execute the code. So methods are like ABS. So if you want to find the absolute value, sale, cost value, tan value, max value, mean value,
power, if you want to find a random number, if you want to find a round off, okay, जिसे हम बोलते हैं ना round off, then sin, cos, tan, cot, स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करना है, तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है मैथ ऑब्जेक्ट में, जिसका यूज करके हम कोई भी मैथ का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. Here we can give a pi value and e value. Okay, so exponential value भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर हम अपनी pi की वैल्यू भी दे सकते हैं. And all of you know that we have already learned in a maths that pi value is the universally constant. Okay, ये जो pi की वैल्यू होती है वो constant होती है. Next, special values like a null and undefined. So here we have used the variable that is var ned equal to null, var Benson equal to 9. Okay. So here undefined means what? It has not been declared, not does not exist. Okay. Undefined means ये declare नहीं किया है, ये exist नहीं करता. Null means what? Exist but was specifically assigned an empty or null value. Okay, so null ये क्या represent करता है basically कि यहाँ पे हमने उसे create तो किया है, लेकिन अभी तक हमने उसे कुछ वैल्यू नहीं दी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एंटरिंग अ वेरिएबल दैट इज var a. ओके, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो या फिर आप देख सकते हो कि ये जो a वेरिएबल है, ये a वेरिएबल पर्टिकुलरली वी कैन से दैट वी हैव क्रिएटेड. ओके, var a ये एक वेरिएबल है, ये हमने क्रिएट किया है, but we have not assigned any value. So null means what? It is empty. So here like this we can use this two value, that is null and undefined. Undefined मतलब वो exist ही नहीं करता, it is not even created. And null value means what? We have created but we have not assigned any kind of a values. Next we have that is the logical operators. So logical operator means what? We can use so many logical operator to perform a logical calculation, like greater than, greater than equal, less than equal, not equal, equal equal. ऐसे बहुत सारे operator जो है वो हम यहाँ पे use कर सकते हैं. Here we can also use the operators like triple equal to and not triple double equal to. Okay, so triple equal to means what? Whenever we are using two time equal, it will check what left hand side value should match with the right hand side value. So left hand side and right hand side value should be matched. अगर हम वहां पे थर्ड वाला इक्वल टू साइन ऐड करते हैं, देन इट विल आल्सो चेक द डेटा टाइप. सो टू इक्वल टू मीन्स व्हाट? इट्स चेकिंग वैल्यूज. And third equal to means what? It is also checking values also, where it will check whether values are equal or not, as well as it is also checking whether their data type is equal or not. Okay, so like this here we are using this particular operator. Next we have that is the boolean type. Okay, so boolean means what? It's a form of true and false. Okay, so boolean will have only two value, that is true and false. अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है, रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हो, तो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट होता है इन द इट इज इन द फॉर्म ऑफ बुलियन. ओके, वो हमेशा जो रिजल्ट है वो बुलियन में होता है. सो बुलियन वी कैन से दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रू एंड false. Okay, so like this we can use this particular things in a JavaScript. There are lots of things in a JavaScript, but in short, I have explained some things that we are using, some data types, some operators, even some objects, and all that things I have explained you. Okay, so like this, हम इस particular JavaScript में ये सब चीजें use कर सकते हैं. Now I'll show you one project of a JavaScript कि JavaScript का use करके हम कैसे project develop कर सकते हैं, किस तरीके का project हम develop कर सकते हैं. So I'll show you that one. So just give me 1 minute. Yes, Sakshi, I will definitely share this PPT to you. Okay. So yes, so I'll show you one project how we can create or how we can develop one particular project by using a JavaScript. So
So see, you can see that this is the one project. So now I'll again restart. So this is a game. Okay. So now observe the things. Okay. So in your childhood, you have many, almost all of you have played this game at least once and many more times. Okay. हमने बचपन में बहुत सारा टाइम ऐसी गेम्स प्ले करने में वेस्ट किया है. नाउ इट्स टाइम टू डेवलप दीज काइंड ऑफ गेम्स. ओके, अभी ये टाइम है कि इस टाइप के गेम्स हम डेवलप कर सके. ठीक है. सो हियर यू कैन सी दैट नाउ एंड. ओके, सो व्हाट वाज द गेम क्या था कि यहाँ पे बैकग्राउंड में एक रोड है, राइट. दैट रोड इज देयर. ओके, अगेन रिस्टार्ट. दिस इज द रोड. ओके, एंड यहाँ पे रोड पे दो कार्स है. ओके, एक कार है ब्लू कार, एक कार है रेड कार. ओके, ये जो रेड कार है वो हम मूव कर रहे हैं, मतलब यूजर उसे मूव कर रहा है. इट इज मूविंग इन द थ्री डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. ओके, एंड ये जो ब्लू कार है वो रैंडमली मूव हो रही है. ठीक है, ये सिस्टम जो है वो हमारा मूव कर रहा है. ठीक है, एंड व्हाट इज द कंडीशन, जब ये दोनों कार क्रैश होते हैं, मतलब दोनों कार का ऑफसेट जब एक ही होने वाला है, जब वो मिलने वाले हैं, ऑफसेट विल गेट मैच, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम योर गेम विल गेट ओवर. जब आपका गेम ओवर होता है, वो जो पैनल है गेम का वो रिमूव हो जाता है, दैट विल गेट रिमूव. ओके, एंड हियर यू विल गेट दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, दैट इज द आउटपुट स्क्रीन, और वी कैन से अ स्कोर स्क्रीन, जहाँ पे स्कोर बोर्ड दिखाता है ये. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अस दैट गेम इज ओवर. इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द स्कोर, एंड देयर वी हैव a restart button. When we click on this restart button, आर गेम विल अगेन स्टार्ट. ओके, हमारा गेम जो है वो फिर से स्टार्ट होगा. ओके, एंड देन वी विल बी गेटिंग कंटिन्यूड विद द गेम. ओके, वन मोर थिंग इज दैट व्हेन यू क्लिक लेफ्ट, सेंटर और राइट, मींस अगर आप बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पे देखो. ओके, सो इट इज ऑल्सो गिविंग अस अ साउंड, बिप साउंड आता है, राइट. और स्कोर क्या है, जितने ब्लू कार हमारे पास हुए हैं, दैट ऑल दैट कार्स आर नथिंग बट आर स्कोर. एक ब्लू कार पास हुई, हमारा स्कोर एक से इंक्रीमेंट हुआ. फिर से और एक कार हमारी पास हुई, फिर से एक से इंक्रीमेंट हुआ. ठीक है, सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू डेवलप दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके, सो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स आप क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का यूज करके. ठीक है, दिस इज जस्ट वन सैम्पल प्रोग्राम, और वी कैन से दिस इज जस्ट अ सैम्पल प्रोजेक्ट. You can also work on different kind of a projects in a JavaScript with the help of JavaScript. सो यहाँ पे इसीलिए जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत यूजफुल एंड हेल्पफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एंड दैट्स व्हाई इन अ करंट इंडस्ट्री में अभी जावास्क्रिप्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है. most of the companies are required for this JavaScript. Okay, why? The main reason is why, because JavaScript is used everywhere, like in a website also, in applications also, and in a game also. In a most of the times this JavaScript language is used in gaming system. Okay, gaming में बहुत यूज होता है ये JavaScript का. ठीक है, तो इसीलिए आप JavaScript यूज कर सकते हो फ्रंट एंड में, और बैक एंड में भी आप इसे यूज कर सकते हो. सो बैक एंड हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग पर्टिकुलर नोड एंड एक्सप्रेस जेएस ऑल्सो. एंड नोड और एक्सप्रेस में जो लैंग्वेज यूज होती है, दैट इज द जावास्क्रिप्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई if you understand the JavaScript, if you learn the JavaScript, it will be really help for you, because it will be with the help of the JavaScript you can create a front end also, and you can also create a back end. Clear? Okay, so this is what we have just overview the particular JavaScript. Now next we will move to the second part, that is the React. So see, React, what is React exactly? First we understand that what is React. So see, React is free and open source front-end JavaScript library for building user interaction, user interfaces based on UI component, and it is created by Facebook. ओके, रिएक्ट ये एक पर्टिकुलर ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ये एक पर्टिकुलर टूल है या फिर एक लाइब्रेरी है जिसका हम क्यों यूज करते हैं, टू क्रिएट अ यूजर इंटरफेस. So if you want to create any kind of user interface, then you must have to use this React. Okay, अगर आपको user interface create करना है, then you must have to use this React. And React ये free of cost available है. It is open source and it is free of cost available. You don't have to pay any kind of a charges to use this React. And basically React is created by Facebook. Okay, React किसने create किया है, Facebook ने create किया है. It is created and handled by the Facebook. Okay,
In a today's generation, in a today's era of the companies, React is very popular technology. Okay, React, Angular, ये बहुत popular technology है जिनका यूज हम वेबसाइट डेवलप करने के लिए, वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए करते हैं. ये जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करती है फ्रंट एंड पे. सो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ फ्रंट एंड, यू मस्ट हैव टू यूज दिस रिएक्ट टेक्नोलॉजी. ओके, रिएक्ट में अभी बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स है, बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट्स को रिएक्ट आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यू शुड लर्न रिएक्ट. ओके, इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट, इट्स अ very helpful skill for your further career. In a React, the language that you are using is a JavaScript. Because of that only, must understand first, you must have a thorough knowledge of a JavaScript. Then, with the help of React, you can develop a front end, and with the help of a particular Node and Express.js, you can also create a backend. So question is like how to use this React. So see, React JS is an open source JavaScript library that is used for building user interface specifically for a single page application. So it's used for handling view layer for the web and mobile application. React also allow us to create a reusable UI component. Okay, so React JS जो है वो open source JavaScript library है जिसका यूज हम यूजर इंटरफेस बिल्ड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं. इसका यूज करके आप सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हो या फिर आप मल्टी पेज एप्लीकेशन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. So basically, this React will be used to create a view layer. एक जो view layer होता है ना, view means what? User interface. जो view layer है उसे create करने के लिए हम क्या use करते हैं? Basically React. Then React environment setup. How to do the environment setup for the React? Most important thing is that if you want to use the React, you must have a Node.js. Okay, आपके पास Node.js जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए तो ही आप उसे यूज कर सकते हो. ठीक है, if you don't have a Node.js, you cannot use the React. Okay, so that's why you make sure कि आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में Node.js इंस्टॉल है. Then after that particular thing, you have to create a application of the React. React का application हमें create करना पड़ता है. So here we can use the particular command, that is by using a npm command or by using a create react app command. Most of the time हम use करते हैं that is the npx create react app command. What is the command? Npx space create react app space my app. Okay, so this is the particular command to create a new application in a React. React का एक project होता है. ठीक है, project in the sense what? It will having a multiple files. बहुत सारे files इसमें होते हैं. So definitely whenever you are creating a project of the React, it will take some time. Okay, इसे बनाने के लिए, इसे develop करने के लिए एक थोड़ा time लगता है क्योंकि ये इसमें एक single file, एक single program नहीं होता. In this particular React project, you have a lots of files, lots of particular folders you have. In that folders also you have a lots of particular different files. Okay, so how to create a React app? So you have to come over here. You have to select the particular folder first. So I'll select my folder. So I'll go in a file, open folder. In a D, I have my own folder. ठीक है, I select this folder. Now in this particular folder, these are some projects that I have already created. Now I want to create a new project. So what I have to do? So here I have to write the command. What is the command? Npx space create react app space name of the project. Okay, so npx space create react app space name of the project. My project 1. Okay, and you have to say enter. It will take some time because in the backend lots of files will get generated, lots of files will get created. That's why it will take some time. So see, it have started its process.
सी वी मस्ट हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस पूरी यहाँ तक होनी चाहिए तो ही प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। सो यस, इट विल टेक सम टाइम, विल जस्ट वेट टिल द प्रोसेस विल गेट कंप्लीट। So, as well as I have also told you that before creating this React app, make sure कि आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में Node.js होना जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे देखो, नोड का वर्जन कैसे चेक करना है। यू हैव टू मीन्स यू कैन ऑल्सो चेक वेदर इट इज इंस्टॉल्ड और नॉट एंड ऑल्सो चेक द वर्जन्स। सो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। टिल दैट प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ यू कैन चेक वेदर इन योर लैप देयर इज अ Node.js or not. So you have to go to the command prompt open करना है। Here you have to give the command that is node space hyphen hyphen version, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लेना है that is the, just wait, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज दैट इज द नोड हाइपन हाइपन वर्जन के बाद हम यूज करेंगे दैट इज द npm वर्जन। ओके, सो नोड के साथ हमें चेक करना है कि वहां पे npm का वर्जन है या नहीं। सो npm स्पेस हाइपन हाइपन वर्जन, ठीक है। npm का वर्जन भी हम चेक कर सकते हैं। सो देखो npm क्या होता है, इट्स अ नोड पैकेज मैनेजर। सो नोड में बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, अलग अलग फाइल्स होते हैं। इनको मैनेज करने का काम, या फिर यहाँ पे नोड में जो हम पैकेजेस यूज करते हैं उनको मैनेज करने का काम जो होता है वो होता है npm का। सो जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, आपको सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So here you can see I am getting both the versions, node version also and npm version also. It means that in my laptop node.js is installed. You have to check this first, okay। अगर install है node.js तो ही आप नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज क्रिएटिंग अ रिएक्ट एप्लीकेशन। अगर नहीं है तो आपका पहला टास्क है node.js को इंस्टॉल करो। तो देखो Node.js को इंस्टॉल कैसे करेंगे, आई विल टेल यू दैट थिंग। ओके, सो यू हैव टू गो टू द गूगल। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द गूगल। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे वी आर गोइंग टू सर्च दैट इज Node.js डाउनलोड। ओके, Node.js डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगी, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। सो हियर डाउनलोड ऑप्शन पे जाने के बाद यू विल गेट दैट पर्टिकुलर डाउनलोड ऑप्शन। अदरवाइज सो हियर see here, okay। So in a pre-built installer you have this particular thing, you just have to click on this particular link। okay, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसकी exe डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड फोल्डर में। exe को पूरे डाउनलोड होने के बाद आपको डबल क्लिक करना है, फिर आपको इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नथिंग एल्स, यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग एंड एल्स। जस्ट आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है और लास्ट में इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने के बाद, पूरा इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद फिर आपको चेक करने हैं उसके वर्जन्स, सो दैट कि आप कंफर्म हो जाओगे कि आपका जो Node.js है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है। ओके, सो लाइक दिस यू कैन दिस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन। ओके, सो यहाँ पे आप ऐसे क्या कर सकते हो, जो भी इंस्टॉलेशन है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। नाउ यू कैन सी दैट हियर दिस विंडो कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर क्रिएट हुआ है। Now next command I have to mention is I have to go to that particular path। okay, so हम लिखेंगे cd space my, I think I have a, okay I'll write it again, my underscore project one। okay, मैं path पे गई हूँ। now next command we have to write that is to execute the program npm start। okay,
npm स्टार्ट हमें करना है। npm स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और जो भी उसका रिजल्ट है विल बी शोन ऑन द ब्राउजर। So see, you can see that here we have executed this code. This is how you can create a project. जब आप project create करोगे आपको ये window मिलेगी and this is the main window that you can see. Okay, ये एक main window है. Okay, that you can see. This is the main window where we can create our project. Okay, now let's understand the structure of the particular project. Okay, यहाँ पे एक जो भी structure है उस particular project का वो हम देखते हैं. ठीक है. So here in my project, we have 3 folders and 4 files. Okay, we have a node module as a folder, public as a folder, and src as a folder. And along with that, we also have a 4 packages. Okay, यहाँ पे हमारे पास particular अलग अलग files है, git ignore, package lock.json, package.json and readme file. So see, git ignore means what? जब भी हम एक प्रोजेक्ट दूसरे पर्टिकुलर रिसोर्स में कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट करते टाइम कुछ रूल्स इग्नोर करने होते हैं। दैट इग्नोरिंग रूल्स वी हैव मेंशन ओवर हियर, वी मींस रिएक्ट पर्टिकुलर कंपनी हैव मेंशन ओवर हियर दैट आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फाइल। You don't have to work anything with this file. Then we have readme. So reading के जो nodes regarding this particular React, it is included in this. This is the package log.json and this is the package.json. So package.json file will have all the dependency, all the scripts, versions, and all information regarding that. Whereas package log.json will have the fixed particular things. जैसे कि कुछ वर्जन हमने अपडेट किया तो ये इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। कुछ हमने वर्जन हो या फिर कुछ नया पैकेज इंस्टॉल किया है तो उस पैकेज बारे में इंफॉर्मेशन पे ऐड हो जाती है। सो दिस 4 फाइल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस पर्टिकुलर फाइल्स। ओके, वी आर गोइंग टू नाउ सी द नोड मॉड्यूल। तो नोड में जितने भी मॉड्यूल्स है वो इस नोड मॉड्यूल में प्रेजेंट होते हैं। वी जस्ट हैव टू कीप इट एज इट इज, वी डोंट हैव टू वर्क विद दिस मॉड्यूल्स। Then these are the supportive modules for executing the particular project. Public folder we have these files, that is favicon.h icon, that is ICO. This is the icon. Okay, जो आपको यहाँ पे show हो रहा है. Okay, so this is the particular icon that you are going to see over here. Okay, then we also have a index.html. This is HTML file. Then we have these logos. Okay, ये कुछ logos है जो कि आपके browser पे आपको show हो रहे हैं. And this is the particular manifest.json and this is the txt. Okay, so these are the particular files that are already present in this particular folder. Okay, in a src folder we have a file structure like app.css. तो देखो जो हम वर्क करते हैं वो सभी वर्क हमारा होता है एसआरसी फोल्डर में। सो इस सोर्स फोल्डर में आप देख सकते हो यू हैव अ सीएसएस फाइल। सो सीएसएस फाइल इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल। सो इस सीएसएस फाइल में हमें क्या करना है, जो भी स्टाइल शीट्स है वो हमें ऐड करने हैं। दिस इज द जेएस फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल। सो जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हमें इस जेएस फाइल में लिखना है। दिस इज वी कॉल इट एज अ कंपोनेंट। देखो रिएक्ट में हर एक चीज जो होती है वो कंपोनेंट बेस्ड होती है। कंपोनेंट मींस जेएस फाइल। सो मेन कंपोनेंट ऑफ योर पर्टिकुलर रिएक्ट प्रोजेक्ट is app.js. Then we have a app.test.js means ये जो हमारा app component है उसे टेस्टिंग करने के लिए ये पर्टिकुलर फाइल यूज होती है। दिस टेस्टिंग विल डन ऑटोमेटिकली इंटरनली, यू डोंट हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट। index.js, so index file में कुछ भी आपको स्टाइलिंग करना है you can use this file and then this is the particular logo and all the things. Okay, so the main 3 files we are working with app.css, app.js and here that is the index.css. Okay, so इन 3 फाइल पे हम वर्क करते हैं and then जो भी हमें अलग अलग चीजें बनानी है for that particular thing we are going to use the particular components. We are going to create a components and then we can use it.
सो क्रिएट अ कंपोनेंट, आप कंपोनेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो. सो योर कंपोनेंट इज नथिंग बट द .js फाइल. There are two types of a component that we are using, that is functional component and class component. In a functional component we cannot maintain the state. Okay, functional component में state maintain नहीं की जाती, but whereas in a class component we can maintain the state. Okay, so component let you to split the user interface into independent reusable pieces and थिंक अबाउट ईच पीस इन द आइसोलेशन. कंपोनेंट जो है वो क्या करता है, हमारा जो यूजर इंटरफेस है उसे अलग अलग पार्ट में सेपरेट आउट करता है और एक एक पीस को कंसिडर करके हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं. सो हियर देयर आर टू कंपोनेंट्स, जैसे मैंने बताया दो कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट. सो अगर आपको स्टेट रिलेटेड कुछ भी वर्क करना है, यू कैन यूज द क्लास कंपोनेंट. अदरवाइज इफ यू डू द नॉर्मल फंक्शनैलिटी देन यू कैन यूज दिस फंक्शनल कंपोनेंट. Okay, so let's understand what are the different advantages of the react के main कुछ advantages है, देखो क्या क्या है. So yes, speed. Okay, so with the help of react you can perform different tasks in a very speedily and very fastly manner. Okay, यहाँ पे development जो है आपका easy हो जाता है, आप बहुत easily development कर सकते हो अगर आप react use करते हो. There is a flexibility. Okay, so if you want to create any kind of a thing, if you want to create any project, any particular functionality, then flexibility is there in a react. Performance. Okay, react का performance बहुत अच्छा है. Okay, with the help of react you can improve your application, your website app performance. Usability, we can reuse so many components, we can reuse so many data over here. इट हेल्प्स टू बिल्ड द रीच यूजर इंटरफेस. ओके, यहाँ पे जो भी यूजर इंटरफेस है वो हम रीच यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे आप बहुत अट्रैक्टिव लुक क्रिएट कर सकते हो आपकी वेब पेज के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए. इट अलाउज राइटिंग कस्टम कंपोनेंट्स. ओके, इसका यूज करके हम कोई भी कस्टम कंपोनेंट भी इजीली राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ लेट मी टू शो यू वन प्रोजेक्ट. ओके, मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाती हूँ अभी. बाय यूजिंग रिएक्ट हम कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं. I'll open my terminal. And here we have to write a command npm start. So see, this is one website that I have created by using React. Okay, React का use करके ये website हमने create की है. ठीक है, so here you can see that there is a one menu bar जहाँ पे आपको menu दिख रहा है.
होम, अबाउट, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट, दिस इज द कार्ट जो कि आप शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो. सो वी कैन से दैट दिस इज अ बेसिक online food shopping website, that is the food website, okay, food ordering website. And here we have a particular button, booking now. Okay, now here यहाँ पे देखो ये होम पेज है जिसमें कुछ पर्टिकुलर हेडिंग दिया है, कंटेंट एंड ऑर्डर नाउ का बटन है जहाँ से आप ऑर्डर दे सकते हो. दिस इज द इमेज वी हैव यूज्ड. आफ्टर दैट दिस इज द सेकंड, दैट इज द अबाउट सेक्शन. सो अबाउट सेक्शन में उस फूड के रिलेटेड या फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. एंड देन लर्न मोर पे क्लिक करके आप और कुछ जानकारी यहाँ पे ले सकते हो. इवन यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो ओवर हियर. Next is work. So how exactly it will work? Okay, so this is like these are the three cards, and ये cards यहाँ पे use किए गए हैं. And here you can see you can pick meals, then choose how often, fast deliveries and all the things ये उन्होंने यहाँ पे mention किया है. ठीक है. And then next we have that is the like testimonial, जैसे कि होते हैं ना client की reviews. Okay, all of you know that even we are also choosing any particular thing, और वी आर बाइंग समथिंग बेस्ड ऑन यूजर रिव्यूज. ओके, तो ये जो रिव्यूज है वो यहाँ पे हमने दिए हैं. आफ्टर नेक्स्ट थिंग्स वी आर गोइंग टू सी दैट इज द हाउ एग्जैक्टली दे कैन हेल्प. ओके, मीन्स अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन यूज कर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. एंड द लास्ट वन पार्ट इज द फूटर नोट. ओके, सो ये है हमारा फूटर. ओके, सो लाइक दिस हम ये ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो बिल्टअप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग रिएक्ट. देखो इसका लुक देखो, स्टाइलिंग देखो, एवरीथिंग इज परफेक्ट. ओके, एंड दैट्स व्हाई ओनली करंटली कंपनीज आर रिक्वायर फॉर द नॉलेज ऑफ द रिएक्ट. रिएक्ट का यूज करके आप बहुत इम्प्रेसिव और बहुत अच्छे वेबसाइट का यूआई डेवलप कर सकते हो, फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हो. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन डू विद इन अ पर्टिकुलर लेस टाइम. ओके, बहुत कम टाइम में आप ये डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हो. क्लियर? ओके, सो this is what we have seen in today's particular sessions, like two things, that is some overview of a javascript, what exactly, how to use, where to use, and what is react, how to create a project by using react, and what kind of websites we can develop by using a react. Okay, so I hope everyone got all the points that I have to today. I have explained you today everything, getting all the things. So here साक्षी, चेतन, नंदिनी, पीयूष, ऋतुजा, रमन, सुरुचि, Komalika. I hope all of you understand. Yes, everyone? Getting all these things? Yes, Raman, I'll share you the PPTs. Okay, so see, as because of the time constraint, we are not getting so much time. So within a half hour, 2 hours, I'm not able to explain you the whole things, but I tried so many things to explain you. Okay, so when your session will be getting started, you will get everything, each and everything in a depth. Okay, यहाँ पे बहुत डिप में आपको सीखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सीखनी है. ठीक है. So yes, I hope everyone understood these things. And in tomorrow's workshop, we are going to see particular things about the Java. Okay, हम Java पे concentrate करेंगे, and we are going to see some things regarding the Java. Okay, so yes, thank you for your time. So now we will continue the further things in tomorrow's workshop. Okay, so I'm ending this particular stream. Anyone have any question? Yes, here. Anyone have any question? Okay. Yes, Sakshi. Thank you. Okay. So yes, we will meet tomorrow at same timing with the new topic, that is the Java.